हेलो फ्रेंड्स, कमिश्नर ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग गांधीनगर द्वारा आज एक टेंडर बहार पाडवामां आव्युं छे। जियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशननी जे एजन्सी होय एना एम्पेनलमेंट माटे, एटले के जे ड्रिलिंगनुं अने एक्सप्लोरेशननुं काम करती होय जे एजन्सी ए लोकोने जे खाण खनिज विभाग द्वारा खनिजनुं संशोधन थाय छे एमां ए लोको पार्टिसिपेट करी शके छे। बराबर, हवे आ एक सारी वस्तु कहेवाय। पण आ लोकोने जे टेंडर बहार पाड्युं छे ए टेंडर एवं लगे कि जे आगळ अगाऊ जे एजेंसीओ काम करी चूकेली है, जे खई बधेली कंपनीओ है एने ध्यान में राखीने एने अनुलक्षीने ज अथवा तो ये जे कंपनीओ है एमने काम आपवाना उद्देश्यथी ज आ टेंडर बहार पाड्युं होय एवं लागी रह्युं छे। केम के आमां तमे कोईपण नवुं टेंडर बहार पाडो तो एमां मिनिमम क्राइटेरिया होवा जोईए, जेथी जे नवी एजेंसीओ है जियोलॉजिकल ए पण एमां पार्टिसिपेट करी सके। हवे तमे 40 लाखनुं टर्नओवर मांग्युं छे लास्ट 3 इयर्सनुं। हवे नवी कंपनी होय ए तो आ विचारी ज ना सके टेंडर भरवानुं। एटले कमिश्नर श्री धवल पटेल साहेबने हूँ नम्र अपील करूँ छूँ कि आनुं रिटेंडरिंग करवुं जोईए। बराबर छे। अने एक बीजी वात, ज्यारे जियोलॉजी एंड माइनिंग गांधीनगरनी जे सिस्टर ब्रांच है GMRDS एमना डायरेक्टर पीयूष शाह જ્યારે એમની નિમણૂક કરવામાં આવી છે અને છેલ્લા 2 વર્ષથી એમનો કોન્ટ્રાક્ટ પણ રિન્યૂ થઈ રહ્યો છે। બરાબર, તો એમની જ્યારે નિમણૂક થઈ ત્યારે CGMએ વગર કોઈ નોટિસ કે વગર કોઈ ન્યૂઝપેપરમાં આપ્યા વગર એમની ડાયરેક્ટ ભરતી કરી દીધી નિયામક તરીકે, જે GMRDSના નિયામક છે। હવે એ પોતે જ આ ટેન્ડર બહાર પાડે છે કે જેમની નિમણૂકમાં જ ગેરરીતિ થઈ છે। એટલે કમિશનર સાહેબને હું એક બીજી અપીલ કરું છું કે તમારા ડિપાર્ટમેન્ટમાં જે આ ગેરરીતિઓ ચાલી રહી છે અને જે આ કૌભાંડો ચાલી રહ્યા છે, ખાણ ખનીજમાં અવારનવાર જે ન્યૂઝપેપરમાં આવતું હોય છે આ તે, એ બધું તમે બંધ કરાવો સાહેબ, તમને નમ્ર અપીલ કરું છું।